Hello, hello. Okay. Hello, hello, hello. Okay. Sangmala Jule and welcome back to my channel. So recently I got replaced my mic and Suji Kaltes live start na in case having any issues with what sound na like issue yot na please do let me know in advance. So battery pura full charge macho I am starting but live because I had a taste of what class 10th और मैंने कहा था शाम को मैं डिस्कस करूंगा. In any case, time अति waste में जो क्लास 10th during टेस्ट शाकन न्यू 10th ओके तो क्वेश्चंस अच्छा था बट मैंने पहले ही कहा था कि लाइक क्लासेस में वी कांट डील विद दिस क्वेश्चंस बिकॉज हमें हमारा टारगेट प्रायोरिटी क्या है विंटर में कि लाइक विल कंप्लीट दिस सिलेबस इन एनी केस क्वेश्चन नंबर 1 if one of the zeros of the quadratic polynomial this is -3 then the value of a is abcd option ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಮ ಲಗ್ಭಗ್ ಅದಾಚಿ ದುಗ್ಲೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಓಕೆ ñampo ಅತಾಚಿ ದುಗ್ಲೈ ಗತ್ತೋ ಸೆ कि like polynomial ngata chi duglo p of x equals to chi duglo a minus 1 into ngata chi dug x square plus ax plus ngata sa duglo 1 योतना इसका एक जीरो जो है वो क्या है x equals to -3 यानी that value of x which on putting in the equation आपके पास क्या होगा equation reduces to what p of अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -3 x को मैं यहाँ पुट करूंगा तो दिस रिजल्ट्स इनटू व्हाट 0 बिकॉज x इक्वल्स टू -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो यहाँ पे वैल्यू उसका क्या हो जाएगा 0 होगा दैट इज व्हाई x इक्वल टू -3 0 इसका मतलब आपने यहाँ सिंपल क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करना था सो हमें पता है x की जगह पे रिप्लेस व्हाट -3 सो p ऑफ -3 मतलब रिप्लेस होना ही कर तो सी का चीज है ना a -1 into ngata sam chanalo -3 की पावर इट इज व्हाट स्क्वायर plus ngatachi duglo a into x की जगह I'll replace -3 plus 1 this must be equal to 0 क्योंकि वो x equal to -3 0 था next minus is coming under what square operation का हम चलो 9 into आपके पास होगा a minus 1 minus 3a plus 1 equals to 0 and then उसके बाद क्या करना है of course अगर सीबीएसई ना कलते ngatachi duglo दो तीन मार्क्स का होगा then I need to focus on what presentation otherwise ngatachi duglo MCQ koranda you can straight away solve it now see 9a minus ngata 9 chano distributive property minus ngatachi solo 3a plus 1 equals to 0 like terms collect chosika so हम chano 6a minus 8 equals to 0 तो आपके पास हो जाएगा therefore या मैं और को माइक लिखूंगा 6a equals to what it is 8 therefore a equals to कितना होगा it is 8 upon 6 and this is nothing but 4 upon आपके पास कितना होगा 3 so 4 upon 3 is what right option here very simple ये zeros माने जहां पे polynomial की वैल्यू क्या होगा it is 0 next move करते हैं सर question number 2 again very simple for what value of k the chief is ना class है ना ngati tizam mangpo question solve मच उसमें reason being problem हो सकता है that is why मैंने कहा miscellaneous we will deal what exam हमसे सीधा पितो आता है discussion we will keep the way we are doing now see for what value of k the product of zeros of polynomial is 2 अच्छा यहाँ देखो पहले p of x what is your polynomial here it is quadratic polynomial that is what kx square minus 4x minus बता 7 so इसका जीरोस कितना होगा बिकॉज डिग्री 2 है तो दो जीरो होगा लेट अस से द जीरोस आर व्हाट अल्फा इन बीटा एंड वी नो दैट रिलेशन इन अंगादाची दुगलो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन दैट इज व्हाट अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 गिवन है तो कह रहा है अगर अल्फा बीटा 2 होगा प्रोडक्ट 2 होगा तो के की वैल्यू क्या होगा अबे हमें पता है कि लाइक प्रोडक्ट ऑफ zero is nothing but in terms of what relation between zeros and coefficients c upon ngata a also it is given 2 and c ngata ka samduglo it is -7 upon a ngata samduglo it is equals to k so therefore ngata chi chanoglo cross multiply just k equal to -7 upon 2 is what your value of k that is -7 upon 2 option number का दुखो b चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 ngata duk assertion and reasoning है ना and again this is very heated question in what cbse
यस, assertion and reasoning ये है क्वेश्चन आपके पास। सी assertion मतलब टू गिव अ फुल स्टेटमेंट, having a fact गिवन, और उस फैक्ट को मुझे वेरीफाई करना विद द रीजन ते फैक्ट को जुक चोरा चमुक जस्टिफाई। तो assertion reasoning क्वेश्चन आता ही सोल्व जानो। ठीक है, बोथ assertion and reasoning are true, यस और नो, चिट्ठी को गलत, चिट्ठी को सही, चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन गता आला छिदुगलो, दिस इज द क्वेश्चन। सी assertion गतिला दुक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x। assertion छिदुगलो p of x इक्वल टू दिस, इसका जीरो जो है वो है -1 एंड दिस। तो पहले देखते हैं assertion फोर्सफुल स्टेटमेंट यानी द फैक्ट को ठीक ना बनो। p of x इक्वल्स टू गता सम दुगलो x स्क्वायर माइनस गता सम 2x - 3। इसका जीरोस निकालना है। यस और नो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए गो विद व्हाट, मिडिल टर्म स्प्लिट, ये पता छिदुगलो था। नाउ वी आर इन पोजीशन ऑफ व्हाट, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या मैंने आता क्वाड्रेटिक फार्मूला था ना, आता जीरोस सोचो। बट गता है कि दुगलो ये जीरोस निकालने के लिए सेफ मिडिल टर्म स्प्लिट, x स्क्वायर 3 -3x प्लस करना x -3, यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा x का सम छान लो, कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस करता है 3 लूज करो प्लस x माइनस करता है 3 लूज। अगेन ये दोनों सेम रहेगा, सो आई पिक x -3 और यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज x + 1। ये इसका आ गया, फैक्टराइज हमने किया। बट ये कह रहा है कि देख जीरोस जीरोस जब भी फाइंड करना है किसी भी पॉलिनोमियल का, बीट लीनियर, बीट क्वाड्रेटिक, बीट एनीथिंग, है ना, तो हम p ऑफ x को 0 पुट करते थे। दैट इज फैक्टराइज सोचते आता x - 3 इनटू आता समझ लो x + 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दैट मींस व्हाट कहता है, ईदर ऑफ द फैक्टर हैज टू बी इक्वल टू 0 इफ नॉट बोथ। ये सुनो, या कम से कम एक तो 0 होना चाहिए, दोनों भी होगा। तो मैं कहूंगा x - 3 इट इज इक्वल्स टू 0, या x + 1 इक्वल्स टू आता था 0। Therefore x equals to चिक of 3, x equals to आता था -1। इसका मतलब इकाची दुगलो चिक -1 होतो चिक 3 होतो, zeros are true, ये that means assertion statement is right। अब मुझे ये प्रूव करना है कि रीजन वो का जस्टिफाई चोरो चमु। रीजन गताची दुगलो कि the graph of polynomial p of x, this intersect x axis at -1 and this। अब ये मैंने पहले क्या सी, अगेन दिस हैज बीन आस्क्ड kana lot 2024 ना, ये हैज बीन पैराबोला आता छि दुगलो, इट इज डिग्री 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इट इज 100% ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, अपवर्ड पैराबोला। ये सुनो, अब क्योंकि हमने इसका जीरोस वेरीफाई कर लिया, दैट मींस व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, जीरोस वेरीफाई किया मतलब व्हेन आई ड्रॉ दिस अपवर्ड पैराबोला, पता छि दुगलो कोई जीरोस इसका चिक नेगेटिव ना दु चिक पॉजिटिव ना दु, इट इज समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या होगा 3, दैट मींस कोऑर्डिनेट 3, 0 और ये होगा -1, 0, यही तो होगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब रीजन भी इसमें क्या होगा, दिस इज आल्सो पता चलो ट्रू। सो अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, कहने आता सही गति, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। सुनो, रादर देन व्हाट का एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, और हमें पता है एक्स एक्सिस खुरी का सु यान लो y वैल्यू 0 चानो ते भी फियर गति नंबर ऑफ डिग्रीज, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ माता चुपिलो रूट्स को माता थियो वेरीफाई चुपिन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर गता चिदुगलो, नेक्स्ट है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो, यस इट इज 4 नाउ। तो सिगा अगेन क्वेश्चन माल डेमो दु कलते गता सॉल्व चुने, यस नो देन गे चिलो एडवांस इन थियरी चोस, एडवांस इन मूव चोस, है ना, सीखोगे चीजें। the zeros of this polynomial, again it is quadratic polynomial। now when I say p of x ngata chiduglo ka is equals to, it is x square plus ngata chiduglo px plus ngata chidug q। ठीक है, ये zeros of this polynomial are twice the zeros of this polynomial, यानी ngata young polynomial chidug, that is let us say q of x जर ngata है 4x minus 5x minus ngata samduglo 6। if zeros को chiduglo are twice the zero, ई पे zeros जो भी होगा, e 0 chichachano, e पे 2 times chachano। In any case, na we cannot figure out zeros chino। In any case, question को ना आता तो p value chino 100% p and q का चीज variable associates हो। I'll focus on this quadratic। जैसे पे आता चलो q of x को मैं करता हूँ 0, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x square minus का था सम 5x minus 6 equals to का था सम 0। Okay, then I know that 4 6 that 4x 4 3 8 24 होगा, 8x minus का था चलो प्लस 3x जरा, yeah, this will result into what the middle term split का था चलो -6 equals to का था चलो 0। इनमें से कॉमन यहाँ से आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का था चलो 2 प्लस का था 3 का ना कॉमन थिंग, it is x minus का था चलो 2 equals to 0। again this and this terms are same, so I'll take x minus 2 out। आपके पास बचेगा 4x plus का था चलो 3 equals to 0। so from two factors we get what, two zeros।
Contradict जो ना तेने ना आता explanation होती है पर है ना assertion and reason but reason is not the correct explanation of the assertion ते option होते हैं I think आप मैंने वो paper आप वहाँ देख लेना ठीक है मेरा option A assertion is true reason is true so this होते हैं ते option ठीक तो assertion is true but reason is not correct explanation for the assertion ये option मिलेगा so contradiction that is what resolved in the statement कोरिना so हम so Q of X ngata you discuss then finally ngata I factor is counts okay now see I करेंगे ngata saruglo ngata I kana zero so चलो see या तो ये zero का या ये zero का so x minus 2 माने मतलब ngata x equal to 2 so 4x plus 3 मतलब तो ngata 4x equals to ngata minus 3 x equals to ngata minus 3 upon 4 तो ये दो factors है हमें दो zeros मिला किसका e quadratic polynomial है so ngata e का chi zeros यो E polynomial ची दुगलो are twice the zeros of this यानी कि square roots चिक चिक ची दुग 2 योतना ई बेच हम सोचते नो 2 into 2 that is what 2 times 2 that is what it is 4 yang beta चिक चिक को ngata ची दुगलो ई का zeros ngata minus 3 by 4 योतना ते बेच सोचते नो twice means multiply by 2 that means alpha equals to 4 and beta equals to ngata हम सोचते नो it is minus 3 upon 2 ये zeros आ गया इसका अच्छा ngata lunch zeros yes or no launching ngata koi zeros topna now we can easily figure out p value ngata bos nam ngachi lo itos question on sana ठीक है मेरा नाम ngata itos question on ngata chi chalo लेका हमेशा क्वाड्रेटिक ना मोर और लेस है ना टॉपिक करो रिवॉल्व करो द रिलेशन बिटवीन zeros and चिदुगलो कोएफिशिएंट सो नाउ ई केस इन चिदुगलो ngata है तो से कि भाई ई पॉलिनोमियल अल्फा बीटा alpha plus beta equals to what minus b upon a on relation yang ata chichu deklo alpha beta product equal to c upon a on ta ying iske na ka suit cha man kata requirement होते हैं सभी का use so now this p is what we are looking इसका मतलब sum of zeros ngata jena alpha plus beta jena equals to minus times ngata cha mano p upon a का sum to it is 1 yes or no और alpha ngata chichi को चीज तो 4 plus ngata चिदुगलो minus 3 upon 2 ये आ जाएगा इक्वल्स टू आता सम पी सिंपली योर सॉल्व शोस इका सम सन एलसीएम में आता सम लो 2 4 इका सम सन 8 minus 3 equals to p that means इका सम सन 5 upon 2 आता चिदुगो p value of that is what our answer yes or no okay minus of course it is what इका आता ची लो p also no इका negative will continue here negative इका continue por so negative सन minus 5 by 2 आता चिदुगो ऑप्शन यानी आता इका चिदुगो सही है चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 कम से कम योस्पा बटन इतना जल्दी भी नहीं है कि वी कांट अंडरस्टैंड दिस यस और नो बिकॉज़ क्लास इन आवर सिल्स था अप्लाई चुचेस लामो छानो था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल टू या द सम ऑफ द zeros of polynomial p of x equal to this is this लो sum of the zeros ये polynomial है sum of zeros को तो मतलब under root 2 होता लो the value of k very simple sum of zeros हमें पता है alpha plus beta equals to 0 minus b upon a the relation between zeros and coefficient then एक आता चाहिए देखो alpha plus beta sum already given है that is equals to what under root 2 this equals to एक आता minus function of b का चीज आता minus a under root ngata 2 upon ngata juglo a is what 2 so minus minus ngata tam chano plus under root 2 cancel minus minus plus वही का 1 दोस्तों k upon ngata tam 2 therefore ngata k value tam chano का k value equals to 2 so k value 2 होगा ऑप्शन ऊपर ngata चलो b again very simple ये क्लास ना जिस क्वेश्चन कंप्लेक्स ध्यान दा से छोड़ना क्वेश्चंस आर सिंपल yes sir but then again having said so आपने यूज्ड टू लर्निंग नाउ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं था ओके नेक्स्ट which of the following is a quadratic polynomial with 0 5 by 3 and gata chiduglo 0 अरे again very simple अगर 0 योजना ई इसका सो हम बसो let's say x equals to 5 by 3 कोई 0 and क्या and x equals to 0 कोई 0 and क्या फैक्टर थ्योरम 9 क्लास में आता है लो कि अगर 0 योजना x minus 5 by 3 and गता चीदुगलो है ना x minus 0 लिखूंगा या x लिखूंगा इट इज सेम यस और नो x minus 0 देता हूं या r चिनोगलो टू फैक्टर्स अगर ये दोनों फैक्टर्स होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर से तो मल्टीप्लाई होगा फॉर एग्जांपल 6 है फैक्टर 3 ना 2 नोज है ना 2 3 मल्टीप्लाई तो आधा चितो बनलो 6 को लोस्ते ले बनो सो दिस फैक्टर इसका आता मल्टीप्लाई चूज सो x minus 5 upon 3 multiplied by ngata चलो x minus 0 है ना this will result into the required polynomial you ngata solve chona we get what ikata mo chona ika simply take LCM ika ji chanalo 3x minus 5 cross ika bracket board ika ngata philosophy so x and then when I multiply x inside yes or no ika tosta confusing ngata chi dugi ka 3x dugi ka ngata
3 ngata chiduglo nanko ika 3 pilo duksu yes or no 3x minus 5 giving me this impression yes or no because so acha ika chiduglo ngata x po pilo duk 3 should have been what denominator it was na option number A was right answer here again very simple next question number 7 zeros yotna ngata chiduglo factor yoncho simple alpha beta are the zeros of the polynomial this then now ika to say very interesting finding. Roots are equal in magnitude, opposite in sign. The coefficient b वो गया बोल के यानी जब कोई diagram आता है draw चुना हमेशा either it is upward योजना आता है equidistance from the origin. Yes or no? 2 योजना का -2 चुना. So es आता है downward योजना again the same thing. Downward योजना it is distance from the origin. Now चिक को alpha योजना चिक को minus alpha relation योजना. Yes or no? Yampung ata te yung patasong roots kalte chik ko reciprocal of each other na 1 upon alpha chik alpha yodna chik 1 upon alpha yodna na alpha into beta ata almost c upon a alpha into beta kalte isko reciprocal na c upon a still continue ka cancel chachono to c nang a coefficient num equal yotnang 100% roots kunchi yotano pata ya zeros gun they're reciprocal of each other. Tenna chosna dasang ata chiduglo kaltes nge chiduglo ikaltos. E case na yang we will learn one very important concept here. Chira mera chick is when without like using what effort mata ये question solve chosen ना yes वो क्या करना है simple mata is उस question वाला पहला step first step इkaltos कि भाई ये polynomial तो alpha beta कोई zeros in लो तो mata ची दिंगे चलो alpha plus beta यानी sum of zeros is equals to minus b means 1 upon mata sam चलो 1 so alpha plus beta mata sam चलो equals to minus 1 and product of zeros ngata siduglo alpha beta equals to c upon a c ngata samduk minus 1 upon 1 so minus 1 upon 1 dina ngata you dina dix alpha plus beta yos alpha beta ngata chios lo minus 1 yos ta ngata relation lo ive 1 upon alpha plus 1 upon beta relation yani value chino lo simple आपने क्या करना है we'll take what LCM alpha beta का जो होता है alpha plus beta ngata numerator का होता है cross multiply chos so commutative beta plus alpha dina alpha plus beta dina हमें पता है alpha plus beta values are it is minus 1 and alpha beta आता values of it is again minus 1 so this results into what positive 1 so answer आपके पास आ गया this is what positive 1 normal ये सुनो ये आ जाएगा but इकल तोस्ता ये जानो ये other way इकल तास्ते करना now again listen to me very carefully question ngata cho sir next time कभी यो मैं इन्ना जो solve chos but लेकिन ngata ची दुगलो कलते alpha beta roots या zeros in क्या सुई p of a any polynomial generalized होना ax square plus ngata samduglo bx plus ngata c na of course a is not equal to ngata 0 yung bas ine the polynomial kave zeros ko koi reciprocally zeros hodna alpha beta hodna ine e case na ngata polynomial chi chano zana q of x na chi chano zana see alpha beta e polynomial is zeros in kya kung root ngiske zeros ngiske reciprocal na tere polynomial bochi chano zana again very simple equal to alpha plus beta ngatai ka chano it is minus b upon a relation yang pochi alpha beta equals to ngata chano c upon a chano yes or no simple take four questions alpha beta equal to c upon a yodna if I take the reciprocal of this 1 upon ngata chano alpha beta dinadiano so es ngata chiduglo a nang c ang ngata replace hos a nang c replace na ngata chiduglo 1 upon alpha into 1 upon beta ngata dinadiamante is equals to a upon ngata chiduglo c and ngata ika patano alpha beta ichino constant term upon ngata chiduglo coefficient of ngata chiduglo x square ano equality हमेशा एक अनुसानो तारिका तोस constant upon ngata chiduglo coefficient of x square chano ing iskal tos now e case ina constant को स्क्वायर coefficient of x square chino x square मैंने simple इसको reciprocal लिया e का नेगा ची पता सो 1 upon alpha 1 upon beta इसके product तना 1 upon alpha ना ngata chi 1 upon beta इसके product तना ngata chi ungos constant upon coefficient and constant ngata sam duglo a and c इसका मतलब q of x को chi chano ngata c वो replace chos you will get the same thing. Chano c square plus ngata chano bx plus ngata chano a. So this is what the quadratic. Yani ngata alpha beta ka zeros in 2 3 zeros in 1 by 2 1 by 3 chwana ngam po ngata quadratic polynomial chi hono zena. It is simple what the step is this. आपने a and c coefficient को interchange कर देना है 100% ngata chi तो बनेगा roots को reciprocal of each other तो बनो rather than
roots are reciprocal to each other. Now ikaltos e concept dikange equation solve chona. Ikachi duglo mata alpha beta matachi duglo ikaltos. Alpha beta 0 yotsana chitun polynomial bo. P of x equals to what? It is x square plus x minus 1 होता है. तो 1 upon alpha, 1 upon beta. तो सम सम बस यानी रूट्स किसका चाहिए? रेसिप्रोकल फॉर्म में नाम रेसिप्रोकल फॉर्म में ना पॉलिनोमियल में आता है q of x simply interchange n and c वे कोएफिशिएंट को चेंज हो. So -1 x square से चलो plus x है ना जो सम plus 1 आता यूज करो. तो ये गलत इन अच्छी दुगलो zeros किसके सम मतलब चाहिए minus b upon आता चाहिए दुगलो which is nothing but minus इनका b सम दुगलो plus 1 and a आता सम दुगलो minus 1. So minus minus cancel करता था most answer 1. So this is also what the second way to attempt this question. हम मगोरंग आता यू यंग क्लास में this question. Okay, but concept very important. Yes or no? You can save your time. You could save your time. Next question number 8 इगलतोस. Question number 8 again. Alpha beta are the zeros of the polynomial. This very simple again. Alpha beta are the zeros of the polynomial x square minus 1. Then the value plus beta is what? ठीक है. P of x दुगलो. P of x equals to this x square minus 1. कोई zeros मतलब चीज चलो. P of x equals to 0. That is nothing but x square minus 1 equals to 0. B term missing होता है ये चीज तो हमेशा factorize switches पे middle term split switches. Sorry, identity issues. So x minus 1 into होता चीज होगा x plus 1 equals to 0. Therefore, x equals to mata 1, x equals to minus 1 for two zeros. Achi duglo alpha plus beta chinoglo alpha plus beta root chichik ko mata samos chichik ata samos minus 1 and of course it is equals to 0. Receiving ये chilo sum china क्या कहता है roots कहता है जब b वाला coefficient missing होत पे नहीं कहते b वाला coefficient missing होता है 100% चिचिक अल्फा होता है चिचिक चलो माइनस अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 ही आना था. ठीक है मेरा so each of question gun ngata time waste show question में तीन चीज होचे से ना is zeros को find choose the quest sum bottom 0 now quadratic polynomial na p of x equals to ax square plus bx plus c ये class ना बार जिसमें if you see what b term गायब ही होता है quadratic ची होता है कि 100,000 ची डिस्टो ना x को गायब होता है b वाला coefficient 0 होगा इसका मतलब 100% कौन है सम सम यानो लो 0 यानो. So that is what competitive approach है. So no, इस उससे ना time बचा चुके हैं ना पथुरे. Rather than we attempt all the questions, ये होना ही होना B0 इतना. Yes or no? ये यहाँ पूछी तुम लोग आता है A नंग C नाम से में उतना root C होता है लो alpha उतना चिकती यहाँ आता चिकती 1 upon alpha क्या for sure होता है. यो माची दुगलो convince ना तेज ना चानो जब ना कंपास होते practice जो ते रंग आहा को नहीं नॉर्मल आपकी question solve चानो पर वाकई ऐसा है. My job is to tell you what. See, हमने कई बार क्लास में भी किया था. B0 योजना हमेशा सम 0 होना because अल्फा ना चिचिक माइनस अल्फा होना सम 0 ही होगा. yang चिदुगलो द quadratic इन को कहते हैं ए नंग C चोक्स योजना without any second thought त्यो संबंधों चिचिक को 2 योजना yang चिचिक को योजना 1 upon 2. This way you can save your time like anything. अगर अगर लापता ना टू होता है ना जानो competition ना कि like if you save 1 second per question now imagine just like 120 questions होना so you can save 120 questions. Or 120 question means 2 minutes and that this rule really plays very important role. Yes or no? Because एक number का आता है competition is on another level. Next आता है question number 9. Question number 9 आता है again yeah alpha beta are the zeros of the polynomial p of x. This again एक आता the layman approach खंपा आता है चीज़ों हमपा आता है चीज़ों का अल्फा बीटा इसका चिन्ह लो कोई पे 0 इन लो इसका मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट में लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस टाइम्स माइनस बी अपॉन होता है दुगलो a which is equals to what it is 3 upon 4 अल्फा बीटा. ये सुनो एक रिलेशन आपके पास ये आ जाएगा. सेकंड लिंक आता है इन प्रोडक्ट ना गोस आता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू आता है तो चलो इट इज -7 अपॉन आता है दुगलो -7 upon it is 4. So this is what product and atachi duglo sum. So quadratic equation tas देखिरना कुले लोग से करो तो relation इधर ही वापस आ रहा है. Now ये केस ना तो कि भाई then 1 upon alpha plus 1 upon beta equals to चिन्ह लो. Again very basic ये चिलो. नाम इस क्वेश्चन होता अपने पहले इसको simplify कर देना. Provided you do have what they can आता values. You simplify चोना आता था मतलब alpha beta equal to alpha plus beta का beta simply LCM. You चोना ये हमको मतीला चुट के alpha plus beta is nothing but it is 3 upon 4. This is main division and upon gata sum duglo 7 upon 4. 4 ना 4 cancel. You are having what 3 upon gata sum duglo 7. This is negative. ये आपके पास आंसर होना था इसका -3 upon ची duglo 7. But ये चिलो क्या होना
ये तो हो गया हमारे पास अपना, ठीक है ना, यूजुअल मेथड। अब यार थोड़ा सा कुछ फायदा होना चाहिए, यस और नो? लर्निंग समथिंग न्यू। अल्फा बीटा का क्वाड्रेटिक यानी अल्फा बीटा जो 2 नंग 3 क्वाड्रेटिक ngata chinlo 0 sinna. Then te polynomial ka be 0 shin kya 1/2 nang 1/3. For example 2 nang 3 ko 0 sin kya polynomial ji. Na te polynomial so kya ka be chin kya 0 po 1/2 nang 1/3 hot. We are taking reciprocal of both the roots. Yes or no? Shkala chupin alpha. Chik chik 1/alpha yotna a equals to c on. Roots are reciprocal to each other. Second, dasa each of question ke khane zer karna soch la chiduglo. Roots kiska 2 na puri to khorang iske reciprocal 1/2 1/3 na chi sanos hai na. आपको कुछ नहीं करना, you simply interchange these two. ये a na c को interchange. Now खैर यहाँ पे एक चीज दुगलो आता alpha beta आता zero slope. कोई reciprocal just आता chi sanos q of x we get another polynomial. A polynomial का भी zero स्क्वायर हो 1/alpha ना 1/beta yot kan be chi sanos evo interchange. So zika jam sanos minus x square minus 3x plus nata jam sanos. What I'm doing is like coefficient को change हो just. In amount of constant nang chi duglo coefficient of x square को interchange sanos. दो क्वेश्चन पीछे जाओ, you will understand this. Yes or no? Still having doubts, we will again discuss this. Now q of x you चाहना पता चलो कौन इसके sum लो हमारो कौन इसके sum means sum of zeros. Now no doubt इका alpha beta इसका चीज लो आता reciprocal form में alpha plus beta sum चीज आनो minus b upon a minus b sum दुख minus करो formula इका चलो b minus 3 upon आता चीज लो a is what minus 7. Yes or no? So this is what minus ना minus का जो आता था minus 3 upon 7. Yes or no? तो एक अच्छी दुगलो ना ई स्टेप मुन दिन जिक्ता सॉल्व चो आसंग अगर ना यू पता होती ना 1 upon alpha 1 upon beta कैसे ना x square ना constant एक coefficient को interchange करो things becomes very easy again. Sapik apply choose think about it, apply this question practice shows you will get it. Yes or no? तो approach देना फंडा clear नो पया starting का पूरा गेला चुप सिल गोसानो. Yes or no? और लास्ट में एग्जाम टाइम कर लेता ना रिलैक्स एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कदा चितुगलो 10 10 चितुगलो माता इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial p of x equal to this again young same question नाही करतोस अल्फा बीटा रिलेशन गताचा मोजनो अल्फा बीटा इक्वल्स टू मोजनो minus b upon a minus b ngata samduk minus 1 upon a. So this is equals to 1 यानी alpha plus beta relation बस samduk लो 1 alpha beta करते इसके multiply था ना सम चलो c upon a that is what minus 4 upon 1 alpha beta ngata you relation so तेने ngata e value पिंग लो 1 upon alpha plus 1 upon ngata samduk लो beta minus alpha into beta ठीक है मेरा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा यू ये चीज दुगलो अगर ये एक रूट से रेसिप्रोकल फॉर्म को कंसीडर मत होना normally we can solve this way also alpha beta minus alpha beta is equals to alpha plus beta मतलब सब 1 alpha beta सम सचनो minus 4 minus इका सम सचनो minus 4. So this is minus 1 by 4 plus आता सम 4 and this is 4 इका पूर्णा इका आता 1 कंसो से नोट है मेरा. So 4 4 is 16 minus 1 plus आता सम सचनो 16 which is equals to आता सम सचनो लो 15 upon आता सम 4. This is what your final answer is. Yes or no? You get lemon approach. Tang yes ano kaltes ngata nga iug saik den yot pina. है ना? Alpha beta reciprocal chuana ngampo zeros pochi chana ngata polynomial ni chana nglo coefficient we interchange 4x square minus x plus ngata ikat chana 1. तो kong iske sum alpha 1 upon beta sum botam chana minus into minus b upon ngata sum minus 4. तो मेरा minus alpha beta इवे रूट से नोक्ते ने इवे zeros ngata alpha beta product sum से minus 4 upon ngata sum 1. But minus minus ये cancel होना minus 1 upon 4 इका आता plus 4 सम equal to some 4 16 इका सम से 15 upon 4 again you are getting the same thing. इसके ना फरक चीज़ चिरेना चिक को हागो practice होता ना सबक time गोरचनो but once you understood it you can save time like anything. अगर ना हमको 10 दिमाग लगाए मिचो से ना then you go this way also सीबीएसई पार हो गया yes or no but सीखने के लिए again ये चीज़ 11 12 ना इस हमारा फीडर है नो 9 10 10th class yes or no having said so जरूरी नहीं है कि 9 10 अच्छे से पढ़ ले तो 11th is going to be easy 11 12th syllabus is on another level अगर if you prepare for the competitive और अगर सिर्फ पास होना है सीबीएसई एनसीईआरटी पास करना है then that is a different thing. Okay now question number कथा चिदुगलो 11 11 form a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively.
Question is Yudhika, find the whose sum whose zeros are this and this respectively. Very simple. Now you can see the sum and product of whose are this and this. Solution is an 11 Boston. In a mano, Natachi Duglo, sum alpha plus beta equals to Nata sum Duglo. It is minus 3 sum. Yes or no? Respectively, matlab circa sum bohanla product होती ना alpha beta Natachi Duglo it is equals to 2. अब मुझे ये quadratic polynomial form करना है, what आपका ये condition fulfill होगा. No, this is CBSE. Most of the questions are like CBSE question. In Leh region in Achakan nga pata hai Leh, what is happening in Leh? ठीक है मेरा यू सीबीएसई क्वेश्चन फ्रेम ऑफ क्वेश्चन बट देन ठीक है यार क्लास में आज डिस्कस हुआ था सो है ना उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज विंटर कोचिंग है ना सिलेबस कंप्लीट थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई एम सेविंग माय टाइम यस बट सीबीएसई क्वेश्चन फॉर श्योर इट इज सीबीएसई क्वेश्चन नहीं गलत तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस थ्री अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 है ना अब मुझे ये पॉलिनोमियल निकालना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा जिसके सम ऑफ जीरो से होगा प्रोडक्ट ये होगा अगेन हम लिखते हैं p of x equals to let the required polynomial be x plus ngata to close c whereby a is not equal to 0 because a 0 छाना आता है quadratic polynomial reduces to linear ये होगा जिसका सम और ये रिलेशन है ओके ऑफ कोर्स ngata to close alpha plus beta equals to ngata sum minus b upon the relation yampong ngata to क्या alpha beta equals to what we have c upon ngata sum to close it is a alpha beta ngata value to get is minus 3 equals to minus b upon ngata a chachano and alpha beta means what it is c upon a alpha beta is what it is 2 equals to ngata sum to c upon a see nam yotnang ratio proportion concept this shows equals to ngata sum of 1 a equals to ngata equals sum 1 अगर इसका बराबर उतना सिंपल आपके पास क्या होगा a equals to 1 chachano b equals to ngata sum 3 minus minus gone and ngata c equals to sum chachano 2 आपने a b c की वैल्यू सिंपली रिप्लेस हियर यू आर डन क्वेश्चन यस और नो अदरवाइज ngata ची दुगलो ये क्वेश्चन हो गया बट यू कैन आल्सो सॉल्व इट दिस वे आल्सो ngala zespin kaltes alpha beta kwechi na zeros inna ई polynomial then x minus alpha na ngata chi duglo x minus beta kwechi chachano factor chachano eso no अगर ये factor हो तो x minus alpha into ngata chi chalo x minus beta multiply to we get x square minus alpha plus beta into ngata x plus ngata chalo alpha beta but in this case ngata एक chi duglo when the coefficient of x square is what it is 1 आता ये जरूरी थोड़ी था कि हमेशा एक का 1 1 yes or no you can simply place it what x square minus sum of zeros ngata sum दुगी का minus 3 x plus ngata ची दुगलो प्रोडक्ट दिखा sum दुगलो it is what 2 ये आपके पास आ जाएगा the required polynomial minus minus plus 3x plus ngata sum दुगलो 2 so this is also answer yeah but each of case the best way is what ratio proportion concept you show you are done with this one नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन आता से दूसरा ओके 12 आई एम लिविंग यस और नो -3 एंड -4 रिस्पेक्टिवली सिर्फ क्या होना प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे क्वेश्चन फ्रेम ऑफ पे नेक्स्ट 13 आता तो a and b लो या नाउ अगेन p of x equal to this polynomial is reciprocal 1 0 of the polynomial now again करते हैं चलो अल्फा बीटा 0 is ना p of x है मानो ax square plus मतलब से दूसरा bx plus c रेसिप्रोकल नथा खुद रूट्स निस्ता रेसिप्रोकल 2 तो 1 by 2 1 by 3 होता ये चीज वाला वी गेट अनदर नथा से दुगलो पॉलिनोमियल दैट इज व्हाट q of x ई केस में सिंपल अपने a and c को इंटरचेंज कर देना यू आर डन विद दिस वन यस और नो दिस cx स्क्वायर प्लस नथा से दुगलो bx प्लस नथा a ऑल्सो नो वी आर डन okay now e case में दुगलो one of the zero polynomial is reciprocal of the other मतलब इक्वल तो p of x नथा इन polynomial था दैट इज व्हाट 6x स्क्वायर ngata sum duglo 37x minus ngata sum charuglo k minus 2 into ngata sum this is the polynomial ई केस में चिक को अल्फा ना चिक को मतलब 1 upon अल्फा यूज देते हो तो दोनों में डिफरेंस देखो यस और नो और इसका प्रूफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था यस और नो इंपॉर्टेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ना इक्वल तो अल्फा 1 upon अल्फा यूज ना ये कहां था यूज दो सो इसको कंफ्यूज नहीं होना यहां पे अदरवाइज इट इज अगेन वेरी वेरी क्लियर नाम ngata roots reciprocal yodna itu chos alpha plus beta equals to ngata minus b upon ngata a open alpha beta chona ngata chona c upon a when roots are reciprocal of each other I'll prefer taking this relation when roots are equal in magnitude opposite in sign ngata you then b0 chatu ika ngata alpha nena chichi ko chit 1 upon alpha they are reciprocal of each other is equals to ngata sum solo c upon a alpha cancel yani c equals to ngata sum 1 because we are having what 1 yahan pe rahega a cross kar diya
A and C हमेशा equal छानो the reciprocal of each other zero नहीं है if you remember this one कि भाई A and C आता हमेशा same छाबोस तो आपका question is solve हो गया यहाँ पे yes or no तो आता जी चलो constant A equals to आता -10 it is what K minus 2 A equal होगा of course उसके बाद आपने इसको simplify कर देना minus K plus आता हम लोग 2 ये क्या आता है वहाँ चलो 6 minus 2 equals to minus K sign change 6 minus 2 is what 4 equals to आता हम minus K therefore K equals to आता हम -4 K की वैल्यू आ गया -4 सिंपल वेरी सिंपल द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर यू विल इक्वेट A and C इसका बराबर चूजेस खत्म हो गया तो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 13 बी सुनो सो पेपर चॉन आसान प्रोवाइडेड वी हैव स्टडीड सुनो मतलब स्टडी कसम सुनो सो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट सुनो बियॉन्ड योर एनसीईआरटी गो फॉर इट डोंट स्टडी फॉर योर 10th क्लास स्टडी फॉर योर फ्यूचर so alpha beta are the zeros of the polynomial this such that this equal to 0 then find the value of c ठीक है ना इनको आता चिदुलो अल्फा बीटा इसका 0 सिनोलो सी अल्फा बीटा 0 सिनोलो p of x is a polynomial आता चिदुलो x square minus p into आता चिदुलो x plus 1 plus आता चिदुलो c अच्छा ये क्वेश्चन इज इट अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला ओके यस और नो तो यहां से समझ में आ जाएगा नाउ वी हैव डिस्कवर्ड कि डिग्री इज योर जीरो इज योर जरूरी मानो यस और नो and the reason for that we have understood using what nature of the roots that is discriminant नहीं करते से यार yung ata distano alpha beta ko 0 sino yes or no and then such that this equation is given ata patano alpha plus beta sam sachano it is okay now you did sane variable wo form ko nanku acharu please refine this equation first yani write this in the standard form x square minus px minus p ata sam sachano c so this is what your constant term yung ata b sachano yung ata 1 bong ata a sachano a b nang ata chidulu c the constant is this 2 now equal to alpha plus beta yani minus b upon a in one of minus ata chidulu b upon a minus क्या पिलोगा minus b chidu minus p upon ata samso 1 minus minus samso p so alpha plus beta equals to ata samso it is p okay ngempong ata chidulu alpha beta ata zena that is c upon a chichano ata है c ata chidulu c minus p please do not mistake this c and e constant is c so you have c minus p upon ata chiduglo a ata 1 so amaso ye again dono relation we are getting from this polynomial tara yung equation ata chitans duk equation ata tans duk alpha plus 1 into ata chiduglo beta plus 1 equals to tam duglo 0 iska matlab alpha into distributive property plus 1 plus ata chiduglo alpha into beta plus 1 equals to what 0 okay alpha beta plus beta plus ata chiduglo 1 equals to 0 okay alpha beta chid ne dena C minus P plus alpha plus beta ngata chi dina deno plus ngata 1 so equals to 0 plus 1 as it is जाएगा plus P minus P like terms 1 can be subtracted can be added C plus 1 equals to ngata so 0 so C equals to ngata terms no minus 1 is your answer again very simple here C की वैल्यू होगा it is minus 1 ठीक next move करेंगे question number 13 14 हो गया 13 हो गया 14 Alpha, beta are the zeros of this polynomial. Then find the value. Tata used to something. You know, man. Because teaching ata lemon approach. Roots zeros इसके reciprocal लेंतो है ना zeros इसके reciprocal लेंतो कोई ना polynomial सोचो ते polynomial बच्चे हम simple 7x square plus ना था चीज़ 3x plus 4 ये ना सी वो interchanges you वो ते polynomial लेनो कावे zeros से किसी को 1 upon alpha किसी को 1 upon beta क्या आपसे पूछ रहा है what is the sum of this को तो हम चाहे 1 upon alpha plus 1 upon beta तो हम चाहे minus times b 3 upon ना था हम सो answer 3 upon 7 सुनो ये मैंने ये चीज उगलो तेना गता लेमन अप्रोच के चीज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू चिरा मेरा इकन रिलेशन अल्फा इनटू बीटा इकन रिलेशन तेने यहां इक सिंपलीफाई चोस क्रॉस चोस फिर मेरा सो गता सीबीएसई ना थोड़े कलते एमसीक्यू क्वेश्चन यो आतना सेव योर टाइम अगर 2 या 3 नंबर यो आतना प्लीज शो द प्रेजेंटेशन यस और नो अदरवाइज अपने टाइम पे होता था बंदा क्वालिफाई करता है आईआईटी बट फेल इन व्हाट 12th क्लास बिकॉज़ रिप्रेजेंटेशन अगेन इज इंपॉर्टेंट presentation. Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this law. Yes or no? यही तो बात था. दफ्सा चुका ज़ेर इंदुकन. Find a quadratic polynomial law. Quadratic polynomial thing law. So masong whose zeros zero इसका zero नहीं zeros are reciprocals of the zeros of this polynomial. मान लो
f of x polynomial jo kya ax square plus ngata chiduglo bx plus c be zeros in kya alpha nang beta te quadratic polynomial pinglo ka be zeros ngata chiyotlo का वे zeros 1 upon alpha and 1 upon beta कोई रेसिप्रोकल ले तो और ऐसे केसेस में मैंने पहले ही कहा p of x becomes what अपने a and c को इंटरचेंज कर देना है cx square plus मतलब हम चलो bx plus a this is what your answer is very simple ठीक है कि नहीं okay next and I'm sure कि like it makes sense very important concept yes or no keep revising you will literally enjoy your exams yes or no okay next निकल तो जी आता चितुगलो next question number 16 find the value of k such that polynomial this has sum of its zeros equal to half of their product. ठीक है ना? Equation statement of sum of its zeros equal to half of their product. माने बता चुके sum of zeros. 16 solution 16. Sum of zeros equals to half means 1 by 2 their product of zeros. And I know that sum of zero is nothing but addition of alpha plus beta equals to 1 by 2 into alpha into beta. Sum of zeros मतलब होता है relation and addition हम लोग minus c upon a sum मतलब सिर्फ minus b upon a equals to 1 by 2 into product sum of c upon a ये value संग मांग मंडी नटी है ना खट्टा नता से दुलो a and a gone इसका मतलब नता से तो minus b equals to 1 by 2 into c क्यों दिया नहीं हमको ना सर minus b संग constant clear दूंगा yes so minus b means minus करो फिलहालुस ये का सम दूंगा था minus times it is k minus का था सम दूंगा k plus 6 ये कौन सा मास ये आ जाएगा equals to 1 by 2 into c का था सम दूं 2 into 2k minus 1 का था ये का दूं this is minus minus sum sano plus k plus का था सम sano 6 equals to 2 into 1 का था सम sano 2k minus 1 तो 2k again like term हुआ तो unlike term हुआ क्या रेसोलस minus 1 हुआ था 6 plus 1 था so 2k minus का था सम sano minus k like terms can be added can be subtracted yes or no 2k minus 1 6 plus 1 is what 7 2k minus 1 is what k values are now 7 very simple again है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का था चलो 17 लग रहा है टफ है बट अदरवाइज मेरे मेरा पेपर तो जाना सब गिविंग हमें ना लाइक लगा कुछ बट नाउ एंड आई एम श्योर कि लाइक थिंग्स आर क्लियर थोड़े क्लास में आयो आंसर लाइक समझ डन ओके नाउ सी यहां पे क्या है question number 17 find the zeros of the quadratic polynomial this and verify the relation I'm not interested in verifying the relation we have done this enough times in the class the zeros of the polynomial ठीक है ना तो zeros ना था इना का जो फेन लो how do we find zeros in this case आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है now since it is what polynomial 7y square minus 11 upon 3 आता समझ लो y minus 2 upon 3 this is suppose p of x आता है फिर हमारा to find the zeros p of x का आता है this 0 find the zeros law find the zeros in a polynomial and also find the roots in a quadratic equation also you know the difference yes or no now see p of x equals to 7y square minus 11 upon 3y plus नहीं minus 2 upon 3 equals to 0 आपको क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करना बट मैंने पहले ही कहा था फ्रैक्शन इन्वॉल्व चाहना यू कुड सिंपलीफाई दिस वर्ड बाय टेकिंग सिंपल वर्ड एलसीएम में करना 3 7 तो हम चाहेगा 21y square minus 11y minus 2 equals to 0 3 across so we get what 21y square minus 11y minus 2 equals to 0 now next is what factorize करें इसको factorize करने के लिए what you do इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 2 into 21 thanks to 42 factored in दूंगा सम 2 into minus 2 into आता 21 can be written as what 3 into 7 आता ये factors का सम आसो ये factors का यूज to उसते आता 11 करो तो बॉक्स फॉर एग्जांपल 3 7 2s are 14 14 in नांग 3 पुतना आता था मतलब 3 नांग 14 पुतना we get minus 11 so 21y square in amount of minus 14y plus आता 3 3y minus 2 equals to 0 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 7 is coming out y कम साथ में आ जाएगा 3y minus 7 to the 14 minus plus 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है so 3y minus 2 will remain here equals to 0 this and this common that means what 3y minus 2 will come out आपके पास आ जाएगा 7y plus 1 equals to 0 the either of the factor यानी इनका मल्टीप्लिकेशन इज 0 इसका मतलब ये होता है कि भाई दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा दो इक्वेशन को बैलेंस करेगा ऐसा राइट साइड में यू हैव 0 ठीक है नहीं आता 0 सी ऑप्शन so y equals to assumption of 2 upon 3 and y equals to other assumption of minus 1 upon 7 so these are the two zeros of this
required kata chi duglo polynomial. Next step is to verify the relation and verify the relation between what zeros and the coefficient. Time and again we dealt with this type of question. Yes or no? Zeros verify karna, you are supposed to what deal with two things: sum of the zeros and product of the zeros. And sum is zeros and hata chi kelo alpha plus beta equal to minus b upon a. Be very careful. Don't put this in the equation. Right, left hand side and right hand side separately solve chose, verify chose, equal chatna teachers. Once you're done with this sum relation in what sum, tanga such product in alpha beta equal to c upon a. Then again taking what left hand side, right hand side, verify them separately. Agar equal yotna done, और उसके बाद फिर finally लिखो the relations are what verified. Question move करेंगे. That is what next question. Then that is question number 18. Find the quadratic polynomial. Na? The sum and product of whose zeros are this and this respectively. Also find the zeros of the polynomial. So obtained. Nikal dena boss. है ना? They used to with this one. Alpha plus beta. This one equal to minus b upon a. फिर हमें ratio proportional concept भी shows. Once you get your zeros, sorry, quadratic polynomial, ये कह रहा है find the zeros भी निकालना है. Middle term split करो, है ना? जैसे मर्जी solve करो. Now question number 19. Alpha beta are the zeros of the polynomial this. Find the quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha, 1 upon beta. Na? 1 upon alpha, 1 upon beta. E zeros yotkan reciprocal. Koye zeros po reciprocal yotkan hai quadratic polynomial this को without any second thought. What I will say q of x is the polynomial जिसका zeros इसका reciprocal होगा दोनों. That means simple a and c को interchange कर दो. It is what 2x square minus 7x plus 6. Now see, where use this pen? A and C interchange shows. कहीं ऐसा you start memorizing this one. इन्हें you अपना टंकी भर दोगे लेकिन सीखोगे. Please understand this. ये आया कैसे? Why we are interchanging this? Question number 3 as still having doubts. We can have what extra classes for these topics. यहाँ लजस तेना like we do have so much content, but लेकिन content को बहुत अच्छे से प्यार हुआ मेहनत मेहनत चोना तेरे content deliver चुसे समझ क्योंकि मशीन ना तेने तेना to repeat repeat कैमरा so repeat this understand this once you understand it then apply it and I'm seeing attach चोना लो change चोना तब हो गया बात हम सब ये सब अदरवाइज क्या यार सर ने कहा ऐसा होगा कल नहीं होगा ये सुनो दो तीन दिन के बाद और खराब हो जाएगा फिर है 2-3 साल के बाद पता ही नहीं चलेगा how go to come on ठीक है मेरा तो उसके लिए how go to if आता ची दुगलो starting a intensive study just don't wait for your body starting a first 3-4 months when you are free feeling आता exam stress में था ने ते time gun silche से ना चम utilize should okay ते जो ना आता टेंशन फ्री होता एकदम स्ट्रेस फ्री होता एंड देन sorry try to cover what try to cover as much as like content का चीज़ कम से कम आधे शर्मा तो कता अच्छी चोगस तो खत्म चोगस sorry टंगोर अगले अच्छा find the zeros of the quadratic polynomial this ठीक है मेरा and verify the relation between this and this not interested at all ठीक है मेरा कोई zeros पिंग लो भैया ठीक है मेरा now we dealt with this one again चिदुगलो quadratic polynomial kata chiduglo p of x equals to 6x square minus 3 minus 7x. Zeros ping lo bhai zeros ping kata p of x ko kata chiduglo zero. But bas in आएंगे question ना सिर्फ तेना zero. The polynomial is not written in its standard form. Please make sure you write this in what standard form. इका minus 3 सौ मासों. So ये आपके पास standard form. उसके बाद then the steps are like this. Move करते हैं question number 21. Question number 21 आता चीदुगलो 21 and 22 अच्छा साथ में डाल दिया मैंने ठीक है. Okay. If alpha and beta no alpha and alpha and beta are the zeros of the polynomial this alpha plus beta equal to chiduglo alpha into beta no then p equals to chiduglo अरे वही बात हो गया ना alpha beta equal to क्या alpha plus beta equals to alpha beta no I'm solving question number का दुगलो 21 इकाने value b c त्यो दिन दोसा मुझे पता है इनका चीज समझ अपने you cancel some minus b equal to c so tai gal to minus b being ata sam dulo it is minus 2 is equals to c ata sam to it is 3p ina mano c sam song ata 3p ho gaya khatam minus plus song 2 upon ata sam chano 3 equals to c song p value so 2 upon 3 ka do option number b very simple next kata chi dugla 22 is 2 and 1 by 2 are the zeros of this polynomial so हम कौन सा वाला सही है अरे भाई ये गलत सा है
शेष माशो जतो नो 2 1 by 2 को 0 से नो रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इसका मतलब ए ना सी हमेशा बराबर समझ जो दोगी आर दोगी का जो that means r equals to p होगा r equals to p ट्राई कर तो p equal to r equal to 2 के कंसीडरेशन p equal to r equals to minus 2 ये भी दोनों इक्वल है p ना r इसका इक्वल होगा ट्राई कर तो p equal to 2 times r equal to this ये पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो p equals to 2 r equals to minus 2 पॉसिबल ही नहीं है लेकिन ता इंग इसके ना आता है देखो you वहां वेरीफाई करो यस और नो आता you confirm so p equal to r से no you chooses if you have no other option but to verify इंग इसके ना काम हो alpha plus beta equals to ngata tam sa minus b upon ngata a you should this alpha beta ngata si duglo 2 ngata chik chik pata 1 upon 2 equals to minus b ngata sam duglo 5 upon ngata sam duglo p so amaso 2 to the 4 5 upon ngata sam 2 equals to minus 5 upon ngata p 5 5 cancel ka 1 samos p equals to ngata sam minus 2 so p equals to minus 2 ngata si duglo r ba ngata minus 2 so option number b was right here you know p na r equal ठीक है का equal to लेकिन एक minus 2 एक चित्र plus 2 इसके ना verify choices if here आता some bound का solve choices जरूरी है next number 23 number 23 चित्र again case study the figure अच्छा एक काम करते हैं यार not feeling well ठीक है बेटा so I'll continue the next question चित्र आता क्या ना वो the case study related questions also 23 24 ते समाता चित्र I'll discuss it tomorrow and मिलेंगे tomorrow again same time 10 in the morning okay till then keep revising ika chukwa dasa chukwa chokan bang revision chos kya hone se 20 questions I think for a day it is like ठीक ठाक है yes or no but this continuously revision tam yes or no continuously revision tam to how goes the revision chose perfect practice makes a man perfect rather than practice makes a man perfect yes or no and respect your time will respect you thank you so much milenge kal evening mein I'll discuss this again if I'm totally okay. Thank you so much.